ऑल प्राइमरी कंसेप्ट्स, अगेन यू कैन एक्सपेक्ट एग्जाम में आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. And then we can continue further. We can talk about something called adjacency matrix method. As I said that there are two ways that we can think of implementing a graph. What is the adjacency matrix? And adjacency matrix for a weighted graph, adjacency matrix for the non-weighted graph. And for that sake, आगे जाके हम लोग अलग से adjacency list is something more that you want to discuss. Okay, no problem. Let us talk about one thing at a time, not mix up together. Not mix up together. कौन है Ekansh? We will see minimum spanning tree once again when we will come down to the algorithm, Prim's algorithm and Kruskal algorithm. So तब मैं आपको with example with diagram दिखा सकता हूँ. You will be able to understand it better. अभी जो आपने सिर्फ सुन लिया है उतना काफी है. डोंट वरी, वैसे भी बाद में जाके उसका algorithm करना ही है हमको. So at that time जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा. तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी अटेंडिंग द होल सेशंस. सो इफ यू आर अटेंडिंग होल सेशन यू विल गेट दैट. और उसके बाद में भी नहीं समझ में आया, feel free to ask me. I will repeat once again. Anyway, to coming back to the point. Coming back to the point, I was saying there is the adjacency matrix. So what is the adjacency matrix? The adjacency matrix, I'm saying that if graph have v vertices, a v by v matrix can be formed to store edges of the graph. What I said? v by v matrix. अगर आपके पास टोटल 6 vertices है, अगर आपके पास टोटल 6 vertices है, तो 6 vertices के लिए you can have a 6 by 6 matrix. Okay. By the way, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, here I am talking about the non-weighted graph. बाद में weighted graph का हम लोग अलग से example लेंगे. Please understand that. Going ahead. Each matrix element represent represent presence or absence of a edge between the vertices. So जहां पर edge है, listen carefully, जहां पर edge है वहां पर हम लोग 1 करेंगे, और जहां पर edge नहीं है वहां पर हम लोग 0 करेंगे. अगर आप लोग जावा में हो तो वैसे आप लोग बुलियन भी यूज कर सकते हो. जहां पर edge है वहां पर आप लोग ट्रू कर सकते हो, जहां पर edge नहीं है वहां पर आप लोग फॉल्स कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. आपको 1-0 करना है, ट्रू फॉल्स करना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. करेक्ट. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया, 1 is indicating that age is there, 0 is indicating that there is no age. For undirected, एक काम करते हैं, हम लोग करके देखते हैं, बचे हुए थ्योरी बाद में होता रहेगा. टेक अ लुक एट दिस. आई होप आपको ग्राफ दिख रहा है और करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स भी दिख रहा है एक ही स्क्रीन में. तो मुझको यहाँ पर क्या करना है, सी इट केयरफुली एंड प्लीज पे अटेंशन. एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये आपको बिल्ड करने आना चाहिए. मैंने कहा ना, जिसको ये समझ में नहीं आएगा उसको मैं वैसे भी बचे हुए जो एल्गोरिथम्स हैं, वो बताने का कोई चांस ही नहीं है. और वो बचे हुए एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने का भी चांस नहीं है. समझने का बाय हार्ट आप लोग कर सकते हो, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल एंड ओपन टू यू. तो प्लीज पे अटेंशन. वी आर गोइंग वन बाय वन. गोइंग वन बाय वन. व्हाट आई वांट इज दैट zeroth vertex और a vertex से, टेक अ लुक एट दिस, a vertex से कहां पर एजेस है. a vertex से b में एज है, c में एज है, d में एज है. टेक अ लुक एट दिस. हॉरिजॉन्टल रो हम लोग कहेंगे, सॉरी ये जो रोज है, ये रोज को हम लोग कहेंगे दिस इज लेट्स से काइंड ऑफ माय सोर्स वर्टेक्स. और ये जो है इनको हम लोग कहते हैं लेट्स से काइंड ऑफ अ डेस्टिनेशन वर्टेक्स. And if you understand that, please pay attention. A say there is a age with B, A say there is a age with C, A say there is a age with D, but there is no age from A to E, and A to F. I hope you are able to see and you are able to understand this. If it is still not clear, let me go ahead. Let me try it once again. From B, A B से कहाँ पर एजेस है? 0 में एज है, D 2 में एज है और 4 में एज है. ए बी से 0 में एज है, उसके बाद में 2 में एज, सॉरी 0 में एज है, 2 में एज है और 4 में एज है. बाकी कहीं पर भी एजेस नहीं है. ये बाकी कहीं पर भी एजेस नहीं है. हैव यू नोटेड दैट? जहां जहां पर एज है, मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन. यहां से यहां पर बी टू ए एज है, गोइंग अहेड, बी टू सी एज है, ये मैं बता रहा हूं, और तीसरा बी टू ई एज है. आई होप इट इज क्लियर. एंड इफ इट इज क्लियर, नाउ आई वांट यू पीपल टू टेल मी, सी का लाइन आप लोग पूरा करोगे. कंप्लीट द लाइन ऑफ सी. कंप्लीट द लाइन ऑफ सिक्स, सी 6 वैल्यूज. Yes, there is a age from C, there is a age to A and B. तो A and B
these two are ones and other ones these are zeros. Okay, that is good. D का एज, फ्रॉम डी ए के साथ एज है, बी के साथ एज नहीं है, सी के साथ एज नहीं है, डी के साथ एज नहीं है, ई के साथ एज है, एफ के साथ एज है. ओके, यू कंटिन्यू फर्दर. नेक्स्ट, ई से, फ्रॉम ई, बी और डी का एज है, फ्रॉम ई बी और डी का एज है, तो बी का एज है और डी का एज है, बाकी कोई एज नहीं है. एंड फ्रॉम एफ सिर्फ सिर्फ डी का एज है, बाकी कोई भी एज नहीं है. सो वी हैव गॉट थिंग्स इन प्लेस. इज दिस ऑल राइट? So now I hope you people have understood how adjacency matrix is done, how adjacency matrix is managed. Now the question is, from undirected edges, for undirected edges, you see that adjacency matrix is always symmetric across the diagonal. So what do you mean by symmetric across the diagonal? अगर आप लोग ठीक से नोट करते हो तो you will be able to see that आपका जो पूरा का पूरा ग्राफ है, आपका जो पूरा का पूरा ग्राफ है, if you could see that, you will find that it is, let's say, one part, and you find that the other part is exact replica of this. Are you able to see that? And that's why I say that it is symmetric across the diagonal. आप लोग check करके देख सकते हो, and you'll find that it is just the opposite of this. This is just the opposite of this. So that is something that you can note it. And finally, space complexity is pretty clear. A space complexity of this implementation is O of V square. A V square matrix ही बना रहे V by V का. So it is space complexity. मैं space complexity कह रहा हूँ. Time complexity के लिए algorithm होना चाहिए. अभी तक हम लोग algorithm की बात नहीं कर रहे हैं. बाय द वे, ये ग्राफ कैसा है? बाय द वे, ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ नॉन वेटेड है. नॉन वेटेड है तो एज के लिए 1, एज नहीं है तो 0. व्हाट अबाउट इफ इट इज अ वेटेड ग्राफ? Oh, now there is a problem. If it is a weighted graph, take a look at this. If it is a weighted graph, now what I can do? Again, it is quite similar. It is quite similar. Only thing, जहां जहां पर weight है, जहां जहां पर weight है, I need to put a weight. जहां जहां पर weight नहीं है, I need to put infinity. जहां जहां पर वेट है वहां पर आई नीड टू पुट 1. जहां जहां पर वेट नहीं है, डोंट कीप इट 0, यू कीप इट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इंडिकेटिंग दैट कि ये नोड उस नोड से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है. राइट? चलो, यू स्टार्ट विथ ए से. कहां पर एजेस है? ए से जो बी में एज है, डायग्राम आपको दिख रहा है, ए से जो बी में जो एज जा रहा है, सो दैट इज हैविंग 7, वेट इज 7. ए से सी में जो एज जा रहा है, इट इज हैविंग 4. ए से डी में जो एज जा रहा है, इट इज हैविंग द वेट 8. लेकिन जहां पर एजेस नहीं जा रहे, आई एम कॉलिंग देम एज इंफिनिटी. आई होप यू गॉट द पॉइंट. एंड नाउ प्लीज हेल्प मी टू कंप्लीट बी. चलो, बी का लाइन बताओ. इंफिनिटी यू कैन मार्क इट एज क्रॉस एक्स. इंफिनिटी यू कैन टाइप इट एज एक्स. एंड नाउ टेल मी, बी का लाइन पूरा करो. बी टू B2A, B2A, it is 7, good. B2, B2C, B2C, it is 9, B2C, it is 9, B2E, B2E, it is 5, and rest all, they are not connected. I hope this is clear. Continue, do it for C. प्लीज पेपर वर्क खुद करो, खुद पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बाद में बस बोलना मत सर ये आप फास्ट जा रहे हो करके. अगर आपका बेसिक, अगर आप लोग इमेजिनेशन आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स का नहीं हो रहा है तो कोड लेवल पे वैसे ही हालत खराब हो जाता है. नथिंग मच आई कैन हेल्प देन. चलो, इट इज 4, 9. एंड यू कैन नोट दैट जो आपके फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर एबल टू आंसर. सो अगर इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, देयर आर लाइकली चांसेस आर दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन अ लेक्चर. प्लीज मेक योर इन्वॉल्वमेंट. कंटिन्यू फर्दर. डी का line of D, it is A, E and F. A, E and F. Yes, you find that it is 8. E, E का line, infinity
5, नेक्स्ट F का लाइन, F लास्ट लाइन, F to D सिर्फ एक ही कनेक्टेड है, सो दैट विल बी 2, रेस्ट ऑल आर इन्फिनिटी, राइट। बाय द वे वापिस ये ग्राफ अनडायरेक्टेड था, एंड सिंस इट इज अनडायरेक्टेड था तो वापिस से आप इसको देख सकते हो, इट इज सिमेट्रिक अक्रॉस द डायगोनल। अगर वो सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर आपने यहाँ पर नोट किया है, कुछ चीजें आप लोग नोट कर लो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू व्हेन वी गो फॉर अ कोडिंग, क्योंकि इसके बाद में मैं अभी जावा का प्रोजेक्ट ही क्रिएट करने वाला हूँ। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, एंड इफ यू सी इट वेरी वेल, आई एम एबल टू सी दैट अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं दैट देयर इज एज फ्रॉम ए टू डी, प्लीज पे अटेंशन, ए टू डी, तुम लोग कहते हैं ए टू डी एज है, इट ऑल्सो मीन्स दैट डी टू ए भी एज है। Have you noted that? ये undirected graph है. If it's still not clear, go ahead. Let's say B to E. I'm talking about this edge. So B to E, there is a edge. At the same time, we are saying that E to B, there is a edge. सर मान लो अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता तो हम लोग सोर्स टू डेस्टिनेशन एज वेल एज डेस्टिनेशन टू सोर्स ऐसा हम लोग कभी नहीं करते। सोर्स टू डेस्टिनेशन एज वेल एज डेस्टिनेशन टू सोर्स ऐसा हम लोग कभी नहीं करते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज अप्रिशिएट दिस, एंड इफ दिस इज क्लियर, let me go one more step ahead, and let me try to implement it now. अब जो आप लोगों ने कहा है वो एक्चुअली हमको इंप्लीमेंट करना है ऑन पेपर। तो सर किसका इंप्लीमेंट करेंगे? हम लोग सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ का भी करेंगे, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ का भी करेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन, विल गो अहेड एंड नहीं, डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड नहीं, वेटेड और नॉन वेटेड का मैं करूंगा, डायरेक्टेड एंड नॉन डायरेक्टेड दैट आर प्रीटी सिंपल। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर, आई एम डूइंग इट, लेट्स से नॉन वेटेड ग्राफ फर्स्ट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर द नॉन वेटेड ग्राफ फर्स्ट, पहले वो वाला खत्म करते हैं और उसके बाद में वी विल गो फॉर द एडजेसेंसी मैट्रिक्स विद द वेटेड ग्राफ, लेकिन वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। हम लोग यही पर है। गो अहेड, लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू क्लास and adjacency matrix non-weighted graph, something, whatever you want to write it, you write it there, and I'm just going to say main, finish. Yes, it is in place, and then I want to create a class for this. So class adjacency matrix non weighted graph. Okay, this is like adjacency matrix non weighted graph. I'm making it ready. तो सबसे पहले, how many vertices are there? You need to decide how many vertices that you want, so you can always have like vertex count as one of the member. If you at all need कि नहीं सर मुझको edges count जितने हैं ये भी मेरे को कहीं पर तो स्टोर करना है, you can even have let's say edges count over there, and at the same time now mainly what you need is the adjacency matrix. So your adjacency matrix, let's say I'm call it, let's say adj mat, like adjacency matrix, and this adjacency matrix ये कितने बाय कितने का होना चाहिए? Actually it should be the 2D array. Again आपको जावा आता है और जावा में अपने 2D array बनाया हुआ है, तो यस लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रेफरेंस रख रहा हूँ क्योंकि मुझको आगे जाके मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, that I will do it separately. Let us go ahead. Just to make this implementation bit more easy to manage, what I'll do is that I'll take the vertex count, as an argument from the user. So vertex count, I will take it as a within a constructor so that I can allocate the memory there itself. So vertex count is equal to I'm taking it from the user. Edges count फिलहाल के लिए मुझको पता नहीं है, so I can keep it 0. और जितना आपने वर्टेक्स काउंट दिया है उसके हिसाब से लेट मी एलोकेट द मेमोरी. हाउ डू एलोकेट द मेमोरी फॉर दिस एरे? एरे कितने का एलोकेट करना है? वो वर्टेक्स काउंट बाय वर्टेक्स काउंट का एरे एलोकेट करना है. यू गो अहेड, यू एलोकेट द एरे फ्रॉम लाइक वर्टेक्स काउंट टू वर्टेक्स काउंट.
इज दिस कंफर्टेबल? नाउ यहां तक ओके, 2D एरे एलोकेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर, एंड इनपुट फ्रॉम द यूजर, मुझको यूजर को पूछना है भाई तुम्हारे पास कितने एजेस है और एजेस कहां से कहां तक के एजेस है। ओके, सो आई विल हैव अ मेथड called the accept method or input method, and in the accept method or input method I want to ask user, I want to ask user, tell me how many, tell me how many ages that probably you have. So I can just go ahead and I can ask that enter number of ages. Okay, and whatever user is saying, I need to probably collect it. So you need a scanner. You people know the scanner for that. So I'm simply saying that age count is equal to sc dot next int. I got the scanner. And what is next job? Next job, अब जितने एजेस आपके पास है उतने सारे एजेस सोर्स टू डेस्टिनेशन मुझको पिकअप करने हैं. Okay, let me just go ahead and need to put it into a loop for I is equal to 0, i is less than number of age count जो कुछ भी है, and let me ask user to enter एंटर एज. और एंटर एज कैसे एंटर करना है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स. ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स, दिस इज समथिंग आई एम आस्किंग यूजर कि भाई तुम प्लीज मुझको ये इनपुट दे के दे दो. तो लेट मी जस्ट डिक्लेयर like a source is equal to sc dot next int. I am taking the sc dot next int, and this is destination vertex. A destination vertex, it is also giving me this. ये वर्टेक्स मतलब यहाँ पर हम लोग इंडाइसेस लेने वाले हैं, 0 1 2 3 4 वॉट एवर इट इज. ए वंस इट इज डन, अब मुझको बताओ, अब मुझको क्या करना पड़ेगा, अब मुझको क्या करना पड़ेगा. आप लोग ये मत भूलना कि बाय डिफॉल्ट जब हम लोग एडजेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. I hope you are aware of it. By default, all elements are zero. If you are still not sure, if you are not sure, you can always go ahead and you can write a loop. You can write a loop, and within a loop, you might want to make it equal to zero. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि initially I just want to keep it everything zero first. Initially, I want to keep everything zero first, and once it is everything is zero, later on जितने ages है, ये जितने ages है, उतने ages मुझको सिर्फ वन करने हैं. ए उतने एजेस मुझको सिर्फ वन करना है. सो आई जस्ट, वैसे अगर टू बी फ्रैंक ये लाइन मैं नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा. क्यों चल जाएगा, क्यों चल जाएगा ये लाइन नहीं लिखूंगा तो भी, क्योंकि जावा में जब हम लोग एरे ऑफ इंटीजर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारे वैल्यू जीरो ही होते हैं. आई होप उतना जावा आपको आता है. सो वैसे भी बाय डिफॉल्ट वो जीरो ही होते हैं. हम लोग यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज है ना, यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट मी कंटिन्यू फर्दर, लेट मी कंटिन्यू फर्दर. अब ये सारे जीरोज है, तो जो सोर्स टू डेस्टिनेशन है, हैव अ लुक एट दिस, सोर्स टू डेस्टिनेशन है, वो वाला वैल्यू मुझको क्या करना है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स. सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, वो पर्टिकुलर वो सेल, वो पर्टिकुलर सेल इन दैट मैट्रिक्स, वो मुझको क्या करना है, आई वांट टू मेक इट इक्वल टू 1 to indicate that there is a age. Yes, you go ahead, you simply say adj mat of source to destination, I just want to make it 1. बाय द वे, आपका ग्राफ कैसा है, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड है. अभी हम लोग जो ग्राफ कर रहे हैं वो डायरेक्टेड कर रहे हैं, अनडायरेक्टेड कर रहे हैं. फिलहाल के लिए हम लोग अनडायरेक्टेड कर रहे हैं. अगर आप लोग अनडायरेक्टेड कर रहे हो, प्लीज नोट दैट सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर कनेक्टेड है, इसका मतलब डेस्टिनेशन टू सोर्स भी कनेक्टेड है. एम आई करेक्ट? अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन कनेक्टेड है, इसका मतलब डेस्टिनेशन टू सोर्स भी कनेक्टेड है. इट इज वेरी वेल. आई एम सेइंग दैट दिस इज, I say that just delete this line for directed graph. अगर आप लोग डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जा रहे हो, अगर आप लोग डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जा रहे हो तो आपको ये लाइन निकालना पड़ेगा. इसलिए तो मैं डायरेक्टेड ग्राफ का अलग से प्रैक्टिकल नहीं दिखाने वाला हूं. सो डायरेक्टेड ग्राफ प्रैक्टिकली सेम एज दिस, एक लाइन सिर्फ डिलीट कर दो, रेस्ट एवरीथिंग इज डन. ओके, दैट इज गुड. कैन आई जस्ट गो अहेड, खत्म हो गया. पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ए पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, and then I want to display whole matrix. Yes, you can try to display the whole matrix. How do you display the whole matrix? It is pretty easy for me. Let us just quickly go ahead and try to display the matrix. Let's say system order println, and what I want to display is adj mat of, let's say, I of j. This is something that I'm trying to display, and बीच में आपको शायद कुछ स्पेस देना है, टैब देना है, वो आप लोग डिसाइड कर लो, वो दे दो.
और हर एक लाइन प्रिंट होने के बाद में एक न्यू लाइन, एम्प्टी लाइन। सो यहाँ पर हम लोग एक रो प्रिंट कर रहे हैं, एक रो प्रिंट करने के बाद में एक न्यू लाइन, एक रो प्रिंट कर रहे हैं, एक न्यू लाइन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेट मी जस्ट प्रिंट इट। हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? वी आर प्रिंटिंग एडजेसन एडजेसन सी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। कुछ तो मैंने स्पेलिंग में गड़बड़ कर दिया, मैट्रिक्स। So this is nothing but adjacency matrix that I'm trying to print it. All right, let's just go ahead and let us see how all I can give the input. So adjacency matrix non-weighted graph G is equal to new non-weighted graph. मैं कह रहा हूँ कि 6 vertices. I'm just hard coding number of vertices. अगर आपको ये भी यूजर से लेने हैं, go ahead. यहाँ पर स्कैनर लिखो and you can even take that from the user. एक काम करता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ instead of asking you people. Better I'll do that. System.in and let me ask user, enter number of vertices. Enter number of vertices, and number of vertices that you are taking up is vertex count is equal to sc dot next int. I hope that is fine. और ये जो vertex count आप लोगों ने यहाँ पर कहा है, let us pass it to this. Done. And then let me accept the edges, and once we accepted the edges, then let me display the matrix, and once my job is done, I can always say c dot close. Now let us go ahead and make a data entry, and the most boring task start over here, doing data entry, and which you can observe right now. Just take a look at this, how much time it is taking in data entry, और बाद में पता चलेगा कि ग्राफ का प्रोग्रामिंग कम किया है, डेटा एंट्री ज्यादा किया है। बाय द वे, जो अर्लियर ग्राफ था उसके अंदर हाउ मेनी एजेस वर देयर? 1 2 3। इस ग्राफ के अंदर हाउ मेनी एजेस आर देयर? 7 edges are there, right? So let me enter. How many edges are there? 7 edges are there. Okay, the edges अब one by one बताओ। 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3. So let me say 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3. Okay, next what are the additional edges? अब B से चलो होने वाले edges, A का edge वापस से मत consider करो। Now it is 1 to 2, 1 to 4. Okay, 1 to 2, 1 to 4. अब सी के एजेस, सी के एजेस कौन से है? ये ऑलरेडी हो चुके हैं। डी के एजेस, इट इज 3 to 4, 3 to 5, 3 to 4 and 3 to 5, and this is what my matrix is. I hope you are taking a look at, and the matrix is in front of you. And yes, is it the same matrix? You can check. जो मैट्रिक्स हमको यहाँ पर मिला है वो वाला मैट्रिक्स, और जो हम लोग डायग्राम में ड्रॉ किया है ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपको सिमिलर सिमिलर दिख रहे हैं? ओके, एब्सोल्युटली। बट डोंट यू थिंक दैट ये डेटा एंट्री में आपकी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? तो सर कोई आसान तरीका है? मेरे पास तरीका है। हैव अ लुक एट दिस। व्हाट आई यूजुअली डू इज दैट, ये जो वैल्यूज मुझको इंसर्ट करने हैं, जो वैल्यूज मुझको डालने हैं, वो सारे वैल्यूज मैं सीधा कॉपी करके रखता हूँ और बाद में कॉपी पेस्ट यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग डेटा एंट्री। आई पर्सनली डू नॉट लाइक अ जॉब ऑफ डेटा एंट्री, तो इट इज वेरी बोरिंग टास्क, तो आई डू नॉट वांट टू डू दैट। ये जो कुछ भी वैल्यूज मुझको इंसर्ट करने हैं, ये सारे के सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, एंड लेट मी जस्ट कॉपी देम। You see how quickly we can do that. You copy them, you right click, run as Java application. Why there is a error now? इसको क्या हो गया? Some curly bracket is missing. Please check. This is right. ये मेन का curly bracket हमने खत्म कर दिया, उसके बाद में ये वाला भी curly bracket खत्म कर दिया, और now अरे why it is giving error over here? उसको कमेंट मेरा अच्छा नहीं लगा, saying that use insert curly bracket to complete the class body. अरे किया ना अभी, और कितने curly bracket डालूं? This is too much. Anyway, don't know.
Extra bracket at 47 line number. Is it really? I don't think so. See, this curly bracket is completed over here. This curly bracket is completed over here, and this curly bracket is corresponding to this class. So that is also in place, isn't it? पता नहीं क्या हो गया. हो जाता है कभी कभी, इक्लिप्स भी पागल हो जाता है. या फिर कहीं पर कुछ हमारा टाइपो मिस्टेक हो गया है, कहीं पर गलती से हमारे इससे कोई एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट बीच में ऐड हो गया है, समथिंग लाइक दिस. ये आप लोग जरा चेक कर लो. लास्ट लाइन, हाँ यस, ये कमेंट वाला लाइन. हाँ हाँ. एनीवे, अब ठीक है, ये हुई ना बात. कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया. सो लेट मी कॉपी दिस. ये मैंने इसको कंट्रोल सी कर दिया, एंड लेट मी रन दिस. Let me run this, paste it, and there you get the answer. I hope this is a faster way that you can quickly test the program. नहीं तो बाद में पता चलेगा कि डेटा एंट्री में ही टाइम बर्बाद कर दिया. तो ये मैंने आपके लिए भी रखा हुआ है. Why don't you copy paste? Why don't you quickly run and you can check copy paste, even the input you can copy paste and you can try it. Check if it is working for you. और ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ये कौन सा वाला ग्राफ है? दिस इज नॉन वेटेड ग्राफ. अभी ये अनडायरेक्टेड है. डायरेक्टेड बनाने के लिए कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. डायरेक्टेड बनाने के लिए सिर्फ आपको एक लाइन यहां से निकालना है. सो लेट मी नो इफ इट इज वर्किंग फॉर यू. प्लीज क्विकली कॉपी पेस्ट एंड चेक इफ इट इज वर्किंग. क्विकली कॉपी पेस्ट एंड चेक इफ इट इज वर्किंग फॉर यू. और जब तक आप उसको वर्क कर रहे हो, तब तक मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूं फॉर द नेक्स्ट वन. फाइल, न्यू प्रोजेक्ट. I said that you people try it. I'm waiting for you. Adjacency matrix, and now it is saying that weighted graph. Okay, weighted graph. So next, so finish. Okay, that is good. And even weighted graph, the basic code is still going to remain same. Good. चलो, कुछ लोगों का तो एटलीस्ट वर्क हो रहा है. All right, and I'm looking for weighted graph. All right, we have got like a weighted graph. All right, so I need to change probably the name of a class, not non-weighted. This is a weighted graph. And what is challenge in weighted graph? A weighted graph में challenge क्या है? कि we want to also store the weights over there. I hope you got the point. So we want to also store the weights over there. अब हमें ones और zeros नहीं रखने, हमें weights रखने हैं. और सबसे पहली चीज, जहां पर कनेक्टेड नहीं है वहां पर क्या रखना है? जहां पर कनेक्टेड नहीं है वहां पर क्या रखना है? वहां पर इंफिनिटी रखना है. बाय द वे, हाउ डू यू मार्क इंफिनिटी? हाउ डू यू मार्क इंफिनिटी? इंफिनिटी ऐसा कोई नंबर होता है क्या? नहीं होता है. तो आई विल सजेस्ट दैट यू कंसिडर एक कोई तो नंबर ले लो इन योर प्रोग्राम विच इज लाइक इनफ बिग, डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन. नहीं, डिस्प्ले करने के लिए ठीक है, वहां पर हम लोग एक्स डिस्प्ले कर देंगे. तेजस्वी, इट इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेइंग, इट इज अबाउट स्टोरिंग फर्स्ट. सो पब्लिक स्टैटिक final int like infinity, some big number you can consider, some big number you can consider. or if you want, you might even consider something like ये ऐसे कुछ होता है ना जावा में, integer dot max value. तो आप लोग चाहो तो वो भी कर सकते हो. इट इज अप टू यू what you want to consider it as a infinity. So अगर आपको बहुत ही maximum value चाहिए, you consider integer max value. Otherwise you can keep some enough big number. Choice is yours what you want to treat it as a infinity. और इनिशियली जब हमारा ग्राफ बनना चालू हो जाएगा, वहां पर हमें क्या करना है? जब ग्राफ बनना चालू हो जाएगा, हमें सारे वैल्यूज बाय डिफॉल्ट
ये सारे वैल्यूज बाय डिफॉल्ट इंफिनिटी को सेट करने. If you want to set all values by default to the infinity, and then you go ahead, while you accept the values from the user, what all you need to accept? You need to take the source, you need to take the destination, and you need to also take the weight. I hope you are understanding that. When you take the source, when you take the destination, and you need to also take the weight, and then जो weight user ने दिया हुआ है, that will weight you want to store it. Instead of storing one over there, you need to just go ahead and you need to store the weight, and that's it. It is over. That's it. It is over. सर और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है. Then you continue further. अब सर डेटा एंट्री कैसे करेंगे? डेटा एंट्री करेंगे अगेन 6 vertices, 7 edges, something similar, और 0 to 1 is 0 to 1, let's say 7 weight, 0 to 2, 0 to 2 there is a 4 weight, 0 to 3, 0 to 3 there is a 8 weight. मैं डायग्राम देख के लिख रहा हूँ. 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 9 weight, 1 to 4, 1 to 4 5 weight, and 3 to 4, 3 to 4 weight is 6. Finally 3 to 5 weight is 2. This is coming from this diagram. 0 to 1 it is 7, 0 to 2 it is 4, 0 to 3 it is 8, ये आपको दिख रहा है. 1 to 2 it is 9, 1 to 4 it is 5, 3 to 4 it is 6, and 3 to 5 it is 2. I hope you are able to see that the same values I just put in there, and if the same values are put in there, you continue further. You just copy this, right click, run as Java application, and you just put it value there, and I find that, oh, this is my graph. I hope you are able to see the output. अब जो जो 999 है, आप उसको infinity consider करो, और अगर आपको वैसा consider करना अच्छा नहीं लगता है, you continue further. आप लोग यहाँ पर जब print करना है, वहां पर आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के print कर सकते हो. That is absolutely possible. क्या print कर सकते हो हम लोग? We can always check whether it is infinity, whether it is like a non-infinity. So if it is not infinity, I can write one simple if-else kind of statement over there. If adjacency matrix, this value is equal to infinity, then we can have system.out.print as a, what do you want to print? You decided. Let's have to print x followed by tab, x indicating that this is not there or it is infinity there. या फिर आप लोग और कुछ आपको दूसरा सिंबल अच्छा लगता है, यूज दैट सिंबल. आई डोंट बॉदर, दैट्स इट. और अगर इंफिनिटी नहीं है, आई वांट टू प्रिंट द वेट and I want to print the tab. Okay, let's see if it is working well. And I'm very sure you people are also trying that. I hope now it is looking good. मैं कोड के चेंजेस बता रहा हूं, आप लोग कोड कॉपी पेस्ट करना. कोड के चेंजेस क्या कहते हैं? पहली चीज, बाय डिफॉल्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग एवरीथिंग जीरो, यू मेक एवरीथिंग इन्फिनिटी. सेकेंड चेंज, जो जो इनपुट लेना था, सोर्स और डेस्टिनेशन हम लोग पहले से ले रहे थे. आई थॉट दैट आई विल ऑल्सो टेक द वेट, और जो वेट हम लोग लिया है, वो वेट सोर्स डेस्टिनेशन में हम लोग वेट स्टोर कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन सोर्स में भी हम लोग वेट स्टोर कर रहे हैं. दैट्स इट. एंड फाइनली डिस्प्ले करते वक्त अगर वो इन्फिनिटी है, आई हैव डिस्प्लेड एक्स ओवर देयर. अगर वो इन्फिनिटी नहीं है, आई हैव डिस्प्लेड द वैल्यू ओवर देयर. अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द कोड वाज क्वाइट सिमिलर. कैन यू प्लीज ट्राई दिस एज वेल एंड चेक इफ इट इज वर्किंग फॉर यू. हम लोग बात कर रहे हैं वेटेड ग्राफ को कैसे इंप्लीमेंट करना है. So we're done with the non-weighted graph, and we are also doing it with the weighted graph. Good. Obviously स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी O of V स्क्वायर ही है, और टेस्टिंग करने के लिए मैंने वैल्यूज आपको यहाँ पर दे दी है.